हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं नए टॉपिक के बारे में, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट, आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वी नो दैट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, राइट? मीन्स देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी that is in the form of ATP. तो let's see how it actually takes place. तो active transport में सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम पोटेशियम pump, right? In active transport, first of all we will see the sodium potassium pump. So suppose this is a plasma membrane. Suppose this is plasma membrane, and we know that plasma membrane is bimolecular, means it is made up of lipids and proteins, right? So here will be intrinsic proteins as well as extrinsic proteins, right? तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, so in case of active transport, what happens? The one molecule of ATP, that is adenosine triphosphate, splits up and it splits up into ADP and one inorganic phosphate, राइट? मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एटीपी का एक मॉलिक्यूल स्प्लिट करके एडीपी का एक मॉलिक्यूल बनाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, राइट? तो इन दिस केस मीन्स व्हेन एटीपी स्प्लिट्स अप टू गिव एटीपी, दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, then it release in this process lot of energy is also released, right? So this energy will be utilized in the transport of sodium and potassium ions, right? So this structure is inside the plasma membrane, right? And that is the outside the plasma membrane. Then what actually happens here, this energy will be utilized in the transport of potassium ion, the sodium ion outside the plasma membrane, ठीक है? 3 sodium ion, the transport of sodium ion will take place outside the plasma membrane, and potassium ion, the transport of potassium ion will take place inside the plasma membrane, right? And the number of sodium ion will be 3 always, and the number of potassium ion will be 2 always. Right? So अभी आप लोगों ने देखा what happened in the active transport in the sodium potassium pump. अभी हम pump की बात करें, it means here will be involvement of protein, right? This transport of sodium and potassium ion will take place by means of this intrinsic protein. Intrinsic protein will help in the transport of sodium and potassium ion. So what we have seen that by the splitting up of ATP, that is adenosine triphosphate, we got ADP and inorganic phosphate, and there is a release of energy which is utilized in the sodium and potassium pump, means in the transportation of sodium and potassium. वो कैसे हो रहा है? In this case the transport of sodium ion is taking place outside the plasma membrane, and the transport of potassium ion is taking place inside the plasma membrane, and the number of potassium ion is 2 while the number of sodium ion is 3, right? So this complete process is taking place by the breakdown of one ATP, right? एक ATP के breakdown होने पर ये process होती है। Then अभी यहाँ पर देखने जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, this is quite opposite, means this transport is taking place in the opposite direction. That is why this kind of active transport is also known as antipode. This is also known as antipode. Then what happens after this? See, अभी यहाँ पे सोडियम आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं, which are 3 in number. तो what will happen? Outside, means outside the plasma membrane, the concentration of sodium ion will increase. क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, हमेशा
3 सोडियम आयन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मीन्स सोडियम आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन विल इंक्रीज, राइट. एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन विल इंक्रीज, राइट. सो अभी व्हाट विल हैपन, अगेन अभी यहाँ पे जो प्रोसेस हुई, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अगेन द सोडियम आयन विल मूव इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन along with the glucose molecules, right. Here what will happen, the sodium ion will move inside the plasma membrane along with the glucose, means glucose will be attached with it, right. Glucose will be attached with it. तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस सोडियम आयन इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So this process can take place only when this process will take place, right. पहले तो यही प्रोसेस होगी, जब ये प्रोसेस होगी तभी तो सोडियम आयन का नंबर इंक्रीज होगा, और जब सोडियम आयन का नंबर इंक्रीज होगा तभी जाकर वो ग्लूकोज को लेकर, दिस प्रोसेस इज बाय टेकिंग प्लेस. Here the process of diffusion is taking place. From its higher concentration to its lower concentration. अभी यहाँ पर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, then it will move, it will start moving towards the region of its lower concentration. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन बट along with glucose. So this is how you can see that glucose molecule का transport जो हो रहा है, that is taking place by means of this sodium and potassium pump. ठीक है, so this was the sodium and potassium pump which helps in the transport of glucose, and it is a type of active transport. Few more pumps are also there, just like potassium pump, just like sodium pump, potassium pump, sodium. So this sodium pump is found in the, this sodium pump in the is found in the muscle cells, in the muscle cells and in the neurons. Because the transport of impulses also takes place by means of sodium pump, right. Then this potassium pump is found in the guard cells, in the guard cells, where the transport means where the transpiration takes place, right. Means transpiration की process में भी potassium pump help करता है. तो potassium pump is found in the guard cells of plants. Means we know that guard cells are the part of the stomata which are present in the lower side of the leaf, right, from where the process of transpiration takes place. So this potassium pump will be found in the guard cells, while sodium pump will be found in the muscle cells and neurons. क्योंकि neurons क्या करते हैं, they receive the impulses and they send the impulses, right. Means messages को carry करने के लिए काम में आते हैं, तो यहाँ पर sodium pump पाया जाता है. So this is how we have seen there are different types of pumps which are working in our body, right. So in our next video we will see about endoosmosis and exoosmosis. Thank you.